ऑन अ वर्चुअल बॉक्स। और इसके लिए हमें प्रीरिक्विजिट है, हमें लगेगा सेटअप ऑफ वर्चुअल बॉक्स and the ISO file of your Ubuntu 16.04 or whatever operating system that you want to install on a VirtualBox. I am using Ubuntu 16.04. So first we will download the setup of VirtualBox. Type Google on Google search download VirtualBox. Enter. This is the first link, downloads Oracle VM VirtualBox. Click on the link and then click here of Windows first and your setup box will be downloaded. So for your Linux, click here. So after clicking on Windows first, it will download a .exe file. I have already downloaded this file and store in this folder because my internet connection is very slow and it may take much time for me to get this setup. तो ये रहा हमारा वर्चुअल बॉक्स जो मैंने इस लिंक से डाउनलोड करके लिया है. My version is 5.014 but the latest version is 5.2.80. No problem, you can download the latest version 5.2.8. Now second thing we need is ISO file system of the Ubuntu. So let's Google Ubuntu 16.04 download. Click here. See, Ubuntu 16.04.4 and the recommendation is what? You need a 2 gigahertz of dual core processor, minimum 2 GB of RAM, 25 GB of free hard disk drive space, and then you need either a DVD drive or USB port to install the media and internet access. Help for that for the registration. Other versions are also there, 17.10.0. We are going to choose this version 16.0.04.4 LTS. Click on a download. Scroll down. Click here. Not now. Take me to a download. You click here and you will download this version because of my internet issue. Okay. So after downloading, you will get a .exe file of VirtualBox and a .iso file for your Ubuntu. So let's start with the installation. Double click on the VirtualBox exe file. Next, it will download in this location. Sorry, it will install in this location. Next. Next. Warning. So when you are installing this VirtualBox, for a temporary, your network connection can be disconnected. So click on yes, install. Your installation is started. See, in some systems जिनका configuration या जिनके system बहुत पुराने हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, you will not able to install the latest version. अगर आप install भी करोगे तो उसके अंदर आप operating system नहीं डाल सकते. उसका प्लस स्क्रीन का इशू आएगा. तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ओल्डर वर्जन चूज़ करना है, जैसे कि VirtualBox का 4.0 समथिंग या 4.1 4.2 ऐसे पुराने वर्जन चूज़ करो VirtualBox के. अगर पुराना बॉक्स चालू करते हो इंस्टॉल करोगे तो आपको इशू नहीं आएंगे. एंड दिस इंस्टॉलेशन इज़ रियली वेरी हार्डवेयर डिपेंडेंट. तो मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है उसका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है, that should match with your VirtualBox also and with your Ubuntu system also. So now Oracle VM VirtualBox 5.014 installation is complete and finish. ठीक है. So this is what a UI of your Oracle VirtualBox. तो इसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है. Now click on a new. तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या होना चाहिए जो आप इंस्टॉल कर रहे हो. तो इसके अंदर आप डाल दो
जैसे कि उबंटू है तो उबंटू एंड प्रैक्टिस ओके, चूज़ यहाँ से लिनक्स and from the Ubuntu choose a 64 bit because this is a I'm not sure whether this is 64 bit or 32 bit. Let's choose the 32 bit. If you know that whatever you have download the Ubuntu 16.04, अगर वो 32 bit होगा तो यहाँ पे 32 bit choose करो. If it is a 64 bit, you choose a 64 bit. नेक्स्ट, यहाँ पे आपका जो वर्चुअल बॉक्स है या आपकी जो VM है जो वर्चुअल बॉक्स के अंदर रन होने वाली है, उसके लिए रैम कितना चाहिए, रैम का जो रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए. तो सी माई आई हैव टोटल 16 GB रैम, और इसके लिए इस मशीन के लिए मैं दे सकता हूँ मैक्सिमम समथिंग 11.3 GB. तो मैं इस सिस्टम के लिए देना चाहूँगा कुछ 4 GB, नहीं ज़्यादा देता हूँ मैं, सपोज 8 GB. तो मैंने इस VM को 8 GB दिया है. तो आप जब रैम चूज़ करोगे तो मेक श्योर कि ये जो आपका स्क्रोल है इसको आप ये रेड मार्क्स में इसमें लेके मत जाओ, वरना क्या हो जाएगा, आपकी जो विंडोज़ सिस्टम है उसको उसके जो सर्विसेज है उसके रन करने के लिए रैम कम गिर जाएगी और आपका सिस्टम जो है वो बहुत स्लो चलेगा. सो आई एम चूजिंग 8 GB बिकॉज आई हैव टोटल 16 GB रैम. आपके पास कम होगी जैसे कि 4 GB 3 GB ऐसा होगा, तो ये आप मेक श्योर कि आप ये ग्रीन को, जो ग्रीन कलर का जितना है पोर्शन उसके आप बाहर मत जाओ. Click on next and here it is asking for a hard drive. So yes, for we need to create a hard disk. So यहाँ पे click करो, create a virtual box, create the virtual hard disk now, create VTI, next dynamically size, no we want fixed size, next और फिर चूज़ करो साइज़. तो साइज़ देखो यहाँ पे मिनिमम 15, मतलब 15 के आगे ही चूज़ करो. आई ऑलवेज चूज़ 15 वगैरह ऐसा ही चूज़ करता हूँ मैं. 8 GB सफिशेंट नहीं होता है. क्रिएट, नाउ दिस इज क्रिएटिंग माई हार्ड डिस्क. इट मे टेक टाइम, सो आई एम पॉजिंग दिस वीडियो. So installation is 77%. It is taking time. Okay, so the disk is created. Now click on a start button. So we have created an empty disk. Now we will install our Ubuntu on this empty disk. From here choose your .iso file. So for you your ISO file is there on a download folder, and for me I have stored here root installation Ubuntu. So this is my .iso file that I have downloaded. You can give a path of your ISO file and then click on a start, and now the installation is started. Here you may get one error that your VT virtualization technology is disabled करके. तो for that you need to reboot your system, go in BIOS menu and then go in configuration tab, और वहाँ पे जाके Intel virtualization technology जो VT रहता है उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, और फिर से आप इस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर लो. आपका वो एरर चला जाएगा. दैट इज़ बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वो VT जो रहता है आपका वो डिसेबल करके रहता है.
तो डिसेबल होने की वजह से वो वर्चुअल जो हम मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं वो अलो नहीं करता है. So for this you have to go in a BIOS and then activate your virtualization technology. जिसके बाद आप ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली एरर आपका चला जाएगा. फिर आपका विंडो आ जाएगा. Here it is asking for a try Ubuntu and install Ubuntu. So in try Ubuntu it will temporarily run your OS from your that ISO file, and in install Ubuntu it will install Ubuntu operating system in your newly created virtual drive. So we will go with the install Ubuntu. Click on install Ubuntu and then click on this option, install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware, flash MP3 and other media. So if you forget to choose this option, then your Wi-Fi will not be run. That means your virtual that ये जो Ubuntu है it will not be able to connect to internet. So choose this option, install third-party softwares, and click on continue. This is quite time consuming. Then it will show you, then this window will show you one option. This computer currently has a no detected operating system. Would you like to do it? Yes. So choose this option, erase disk and install Ubuntu. So it will erase your newly created disk. If you remember, हमने एक 15 GB का एक डिस्क बनाया है, ये उस डिस्क को इरेज करने की बात कर रहा है. इट इज़ नॉट गोइंग टू इरेज योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका एक भी ड्राइव. It is installing our logical disk that we created of 15 GB. So here is disk and install Ubuntu. Click on install now. Continue. The next option is where are you to choose a timestamp. So click on India. Say Kolkata is here. Continue. Click on a map. Then language. Yes, English US, English US. Continue. Then your name. For me, Sujit. My computer name will be Sujit VirtualBox. Pick username Sujit. Uh, if you want a password for your Ubuntu, then type your password here. Suppose I'm putting my password here 12345, and then 12345, and require my password unknown. Yes, continue. So installation is started. It is copying files from your ISO file in temporary area. You can say RAM, and then it will install those files on your image or on your the VDI disk.
to use the new solution. Let's start. Please remove the installation medium and then press enter. So for this, click on this close and power off the machine. Okay. Right click on your virtual machine, go in the settings. So here in system, remove the floppy and optical. If you forget to remove this, then the installation will start again. So remove the floppy and optical and click on only or keep only the hard disk. Now click on OK and say right click and start. Almost start. See, my Ubuntu is up. Username Sujit. Password was 12345. 12345. Enter. VM is up and running. Next video we will install Hadoop on this. Okay, bye. Thank you guys.